Hello everyone, this is Pragya Pandey from Roz Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. In our previous video, I asked few questions, so let's see their solution first. And the first question was, how many member countries Interpol does have? And correct answer for this question is 195 countries. Next question was, when did National Human Rights Commission NHRC was formed? And correct answer for this question is 12th of October 1993. So without wasting any time, let's see what is in the news. India abstained from voting on UNGA's resolution condemned and rejected Russia's annexation of 4 Ukrainian regions. A total of 143 states voted for the proposal, 35 were absent, while only 4 nations backed Russia. India's abstention was in keeping with its voting posture and all substantive Ukraine-related resolutions since the war began. It, however, expressed deep concern at the escalation of the conflict in Ukraine, called for an immediate ceasefire, reiterated its traditional position in favor of peace, diplomacy, and dialogue, and advocated keeping diplomatic channels open. India said that it was abstaining since there were other pressing issues not covered adequately by the resolution. The non-binding resolution titled Territorial Integrity of Ukraine, Defending the Principles of the United Nations Charter was brought to the UNGA after the Russia vetoed a similar text condemning its referendum and annexation at the United Nations Security Council. देखिए यहाँ पर UNGA के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं. सो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इज़ द मेन डिलिबरेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन. देखिए हम सभी को पता है यूनाइटेड नेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, मेन ऑर्गन्स हैं, लाइक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, United Nations Security Councils, the Economic and Social Council, the Trusteeship Council, the International Court of Justice, and the United Nations Secretariat. So General Assembly के बारे में हम वापस से यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं. तो it has 193 members of the United Nations represented in General Assembly, making it the only united body with universal representation. देखिए इसको कई बार पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड भी बोल दिया जाता है. द UNGA deliberates and decides on important matters such as peace and security and other international issues. It also decides on the admission of new members. अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो 1953 में पंडित विजय लक्ष्मी became the 8th president of the UNGA, the only Indian GA president to the date. चलिए, so moving on to the next news. The Indian Space Research Organization is developing a next generation launch vehicle NGLV, which will one day replace operational system like the Polar Satellite Launch Vehicle that is known as PSLV. अगर हम NGLV के features की बात करें तो it is a cost efficient semi cryogenic propulsion system, 3-stage reusable heavy lift vehicle with payload capacity of 10 tons to geostationary transfer orbit. Simple robust design that allows bulk manufacturing modularity in all the systems. देखिए यहाँ मैंने एक वर्ड का यूज़ किया था, सेमी क्रायोजेनिक propulsion system, which means refined kerosene as fuel with liquid oxygen as oxidizer for booster stage, which is cheaper and as well as very efficient. चलिए अगर हम इसरो के दूसरे लॉन्च व्हीकल्स के बारे में बात कर लें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है SLV, दैट इज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. द फर्स्ट रॉकेट डेवलप्ड बाय द इसरो was simply called the SLV or the satellite launch vehicle. Next was the augmented satellite launch vehicle known as ASLV. SLVs and ASLV both could carry small satellite, सिर्फ जिनका वजन हो सकता था 150 किलोग्राम तक, only to the lower earth orbit. ASLVs 1990s तक ऑपरेटेड रही, लेकिन इसके बाद PSLVs आ गए. देखिए PSLV फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंड्स फॉर Polar Satellite Launch Vehicle.
It was first launched in 1994. It has been ISRO's main rocket ever since. अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो it is vastly improved and several times more powerful, जिसको सबसे पहले 1990 में इस्तेमाल किया गया था. It is also the first Indian launch vehicle to be equipped with the liquid stage. PSLV is most reliable rocket used by the ISRO till the date, with 52 of its 54 flights have been successful. It successfully launched 2 spacecraft. अगर हम बात करें prominent one की तो Chandrayaan 1 was launched by it in 2008. Along with this, Mars orbit mission, जिसे हम मॉम के नाम से भी जानते हैं, 2013 में इसके द्वारा ही लॉन्च किया गया था. इसरो करंटली यूजेस टू लॉन्च व्हीकल, जो कि कौन से हैं? PSLV एंड द जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. अब अगर हम GSLV की बात करें तो दे आर more powerful. That means they can carry heavier satellite, in fact much deeper into space. अभी तक GSLVs ने लगभग 18 मिशन कंप्लीट किए हैं, जिसमें से सिर्फ फेल लगभग 4 मिशन ही हुए होंगे. इट कैन एक्चुअली टेक अप टू 10,000 kilogram satellites to the lower Earth orbit. This is the indigenously developed cryogenic upper stage forms the third stage of GSLV MK second. ये आपको याद रखना ज़रूरी है. MK third versions have made ISRO's entry entirely self-sufficient for launching its own satellite. Before this, it used to depend on the European Ariane launches vehicle to take its heavier satellite into the space. Next, we have the SSLVs, that is known as the small satellites launch vehicle, जो कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्च व्हीकल के रूप में काम करती हैं और लगभग 500 किलोग्राम तक की सैटेलाइट्स को आराम से ले जा सकती हैं. उसी के अलावा इसरो यूज़ करता है रीयूजेबल रॉकेट्स, फ्यूचर रॉकेट्स, जिनके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है. Environmental Ministry's rupees 50 crore incentive scheme is aimed at stopping farmers in Punjab and Haryana from burning crop residue by incentivizing industrialists and entrepreneurs to set up paddy straw pallistation and torrefication plants. We should also keep this thing in mind that through the year the government has attempted to dissuade farmers from burning straw through penalizing them as well as incentivizing them, such as giving them alteration to burning the straw. It has also encouraged using biodecomposer, a chemical that decomposes the straw into mulch. Experts call for protection of sloth bear on First World Sloth Bear Day. The First World Sloth Bear Day was observed on 12th of October 2022 to generate awareness and strengthening conservation efforts around the unique bear species endemic to the Indian subcontinent, sloth bear. A proposal for observing the World Sloth Bear Day was mooted by the Wildlife SOS India, an organization which is involved in sloth bear conservation and protecting for over 2 decades, and the IUCN Species Survival Commission sloth bear expert team accepted the proposal and declared the day 12th of October as the day to be celebrated worldwide. चलिए, लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट द स्लॉथ बियर हेयर. सबसे पहले इस प्यारे से जानवर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पर देख लेते हैं. तो द स्लॉथ बियर हैज़ लॉन्ग शैगी फर, अ मेन अराउंड द फेस एंड लॉन्ग सिकल शेप्ड क्लॉज. In body structure, it is lankier than the brown and Asian bears. It also shares trait with other insectivorous mammals. Sloth bears have this thick and long muzzle with a small and the very cute jaw with wide nostrils. They have long lower lips which can be stretched over to the edge of their noses, thus allowing suck large number of insects. Sloth bear fur is completely black. अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, बट कुछ स्पीशीज़ में हमें थोड़ा सा रस्टी कलर भी देखने के लिए मिल जाता है. साथ ही वाई और वी शेप का मार्क जो है वो हमें इनकी चेस्ट पर यहाँ देखने को मिल जाता है, एज यू कैन सी हेयर इन दिस इमेज. We have 2 species. First is
Indian sloth bear, another one is the Sri Lankan sloth bear. अगर हम इंडियन स्लॉथ बियर की यहाँ पर बात करें तो दे आर द बिगर, वेल नोन एंड वाइड स्प्रेडेड ऑफ दिस सब स्पीशीज. इट इज़ फाउंड इन द एरिया विथ फॉरेस्ट कवर, लो हिल बोर्डनिंग एंड द आउटर रेंज ऑफ हिमालयाज फ्रॉम पंजाब टू द अरुणाचल प्रदेश. वहीं अगर हम श्रीलंकन स्लॉथ बियर्स के बारे में यहाँ पर बात करें तो द श्रीलंकन स्लॉथ बियर इज स्मॉलर than the nominate subspecies. It is found in the northern and eastern lowland of the Sri Lanka. अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें so they are endemic to Indian subcontinent. Sloth bears are omnivorous and survive on termites, ants and fruits. जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो इनकी जॉ लाइन है it can stretch, काफ़ी वाइड ओपन कर सकते हैं. इसकी वजह से ये बहुत सारे इंसेक्ट्स को आसानी से खा सकते हैं. इनको ही हनी बियर्स के नाम से भी बोला जाता है बिकॉज दे आर फॉन्ड ऑफ हनी. अगर हम इनके और फीचर के बारे में बात करें तो स्लॉथ बियर इज़ दैट दे डू नॉट हाइबरनेट. मतलब जैसा आपने बाकी बियर्स के बारे में देखा होगा कि वो एक ठंड के पूरे टाइम में एक ऐसा पीरियड है जो सिर्फ सोते हुए ही निकाल देते हैं, जिसको वी कॉल्ड एज हाइबरनेशन पीरियड. बट दे आर द वन दैट दे डू नॉट hibernate, that you should keep in mind. Moving next, अगर हम इनके कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में बात करें तो IUCN की रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल कैटेगरी है. साइट्स में अगर हम देखें तो दे कम्स अंडर द अपेंडिक्स 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो ये शेड्यूल 1 में आ जाते हैं. और अगर इनके थ्रेट्स को देखें तो एक्सप्लॉयटेशन बाय द नोमैडिक कालांधरी कम्युनिटी मेंबर्स, man-animal conflict in Gujarat, Rajasthan and Maharashtra and other states, habitats defragmentation, poaching and hunting, some are the major threats that these bears are facing. So it's a time to become a cool. World Standard Day is marked every year on 14th October to raise awareness about the importance of using standardized measurement technologies and industry. Supreme Court pronounces 1:1 split verdict on ruling of Karnataka High Court that upheld hijab ban in educational institution. Chief Justice to assign case to a larger bench. PM inaugurates Indian Institute of Information Technology in Una. And the last is President Draupadi Murmu inaugurates Param Kamrupa, that is supercomputer facility at IIT Guwahati. चलिए, सिंस आपने यहाँ पर देख लिया कि परम कामरूपा को इस्टेब्लिश किया जा रहा है IIT गुवाहाटी में, सो आई एम फ्लोटिंग वन क्वेश्चन फॉर यू. परम शिवाय इज अनदर सुपर कंप्यूटर. आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसको कहाँ पर, किस फैसिलिटी में इस्टेब्लिश किया गया है. सो इट्स अ क्विज टाइम एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी. Your options are here on your screen. Next question is when did the first World Sloth Bear Day was observed? Correct answer आपको हमें comment section में बताने and stay tuned with us to know the correct answer. So this is it for today. Join our batches for UPSC, MPPSC civil services examination. Seats are very limited, so hurry up. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any update. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.